Guys, अब बहुत हो गया. How long are we going to stay silent when the people of our own country are getting murdered in their own land? पुंछ अटैक ने सिर्फ सोल्जर्स को नहीं बल्कि हर एक हिंदुस्तानी के दिल पे चोट पहुंचाया है. इट्स नॉट जस्ट एन अटैक, ये एक वॉर फील्ड बन गया है. पुंछ एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है जो जम्मू एंड कश्मीर में है अलोंग द लाइन ऑफ कंट्रोल. पाकिस्तान ने इस जगह को इसलिए सेलेक्ट किया क्योंकि दिस प्लेस डज नॉट हैव एनी माउंटेन्स, सो दे डोंट हैव टू सेंड देयर एरोप्लेन्स और एयरफोर्स टू अटैक अस. सो उनका कोई रिस्क ही नहीं है. They have directly bombed us with their low-level artilleries. ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान has literally attacked our civilians. Almost 10 लोग मर गया यार, उसमें 2 बच्चे थे. देखो, पाकिस्तान एक डायरेक्ट वॉर कभी शुरू नहीं करेगा because they know for a fact that they can never beat the Indian army. So what do? They use terror groups like Jaish-e-Mohammed, Lashkar-e-Taiba, Hizbul and many more. पाकिस्तान उनको ट्रेनिंग देता है, पैसा देता है and they ensure their safety in the border. And ये पाकिस्तान अकेले नहीं करता है because they are backed up by China. China is like Pakistan's blood brother. अब जब दुनिया पाकिस्तान के ऊपर सवाल कर रहा है, China is silently helping them behind their back through weapon supply, diplomatic aid and economical support. China wants that the South Asia region to be unstable and to make India weak. आपने कभी सोचा है that recently Apple has announced that their entire production will be shifted from China to India. उसके बाद क्या हुआ? The Pahalgam attack, then we attacked back and now they are attacking back. So आपने कभी सोचा है the reality, the fact that the entire monopoly, the entire political thing is actually backed up by China. So China सिर्फ पाकिस्तान का सपोर्टर नहीं but शील्ड भी है. इंडिया ने अगर एक भी सिविलियन को टच कर दिया होता then China would have called this as a war crime and they would have created a massive scene in the international stage. लेकिन चाइना एक चीज भूल गया. इंडिया के पास advanced weapons और intel है. We literally attacked 9 spots at the same time by attacking only terrorist group without harming civilians. ये है इंडिया की पावर, साइलेंट but lethal. See, our generation has been through COVID-19, the pandemic, lockdown, demonetization and whatnot. The last thing which I want is a war. Because as a doctor, जब मैं ICU जाता हूँ, to save even a single life, you guys have no idea how much effort I have to put. Like एक patient के पीछे हम लोग इतना डिस्कस करते हैं, इतना सोचता है, हर चीज को कैलकुलेट करता है. And now so many innocent lives are being lost. And ये सब क्यों हो रहा है? India versus Pakistan, Muslim versus Hindu, or is it actually global politics? And याद रखना, those people who lost their lives in Poonch, they were Muslims too. So those guys just wanted the blood of Indians. So it's high time we guys stay united. Hindu, Muslim, Sikh and every other religion in the country. And इससे हमको यही समझ आता है कि टेररिज्म का कोई रिलीजन नहीं होता है. उसका बस एक ही मिशन होता है, इंडिया को तोड़ना. But the fact is, they don't know that India breaks but we build back stronger. And as a doctor, we are always prepared for the worst case scenario. Like हम हर patient को ऐसा ही treat करता है कि हाँ यार, what is the worst possible complication हो सकता है, and we always stay prepared in advance. And I want you guys to see this situation the same way. कि हम क्या कर सकते हैं, what are the safety measures we can take. I've already made a reel on this, but make sure to have the basic medical essentials. अगर आपके parents diabetic, hypertensive या heart patients हैं, make sure to store extra medications. Make sure to stock up on emergency lights which are run on batteries and not wires. We need to tell the world that this is not just India's war, it is a war for humanity. And as a general public, I want you to take one more safety measure. अगर आपके एरिया या लोकेलिटी में कुछ भी सस्पिशियस चल रहा है कि हाँ यार यहाँ ये सब तो नहीं होता है, कोई अनजान आदमी या कुछ सस्पिशियस एक्टिविटी चल रहा है, प्लीज ट्राई टू इन्फॉर्म द पुलिस. यूनिटी बनाए रखो. हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख एंड एवरी अदर रिलीजन, सबसे पहले वी आर इंडियंस. बिकॉज जब इंडिया एक होता है उसको कोई नहीं तोड़ सकता. जय हिंद.